Hello, English learners. Welcome back to my YouTube channel. Today, I have come with a very interesting topic. I'm going to cover idioms, and I have covered only those idioms which include some food name in it. So, I welcome you all. So, without any further delay, let's start the video. So, idiom को हम हिंदी में बोलते हैं मुहावरे. इडियम एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसका जो मीनिंग होता है उसको अगर एज अ होल अगर हम उसका मीनिंग निकालते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है उसके इंडिविजुअल वर्ड्स का मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है हर्ट इन योर माउथ. अगर आप इसका लिटरल मीनिंग निकालेंगे, लिटरल मीनिंग मीन्स अगर आप इसके इंडिविजुअल वर्ड्स का मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि आपका जो हर्ट है वो आपके मुंह में है, राइट. लेकिन यहाँ पर अगर आप इसका एज अ होल मीनिंग देखेंगे तो इस इडियम का मतलब होता है इट्स अ सिचुएशन वेयर यू फील वेरी नर्वस और स्केयर्ड और बहुत ज़्यादा फ्राइटन्ड सिचुएशन है. उस सिचुएशन में आप बोलते हो दैट आई हैड माई हर्ट इन माई माउथ. फॉर एग्जाम्पल इसका हम सेंटेंस यूसेज देखते हैं. When the plane was about to take off, my heart was in my mouth. जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करने लगा मेरा जो हार्ट था वो मेरे माउथ में आ गया. इट मीन्स आई गॉट फ्राइटन्ड, आई गॉट स्केयर्ड, राइट. तो इडियम्स का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस या फिर एक ऐसी ऐसी फ्रेज जहाँ पर एज अ होल उसका मीनिंग अलग है, एज अ कंप्लीट सेंटेंस उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है उसके इंडिविजुअल वर्ड्स के. ये बेसिकली इडियम्स का जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली अपने जो हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है उसको थोड़ा एनहांस करने के लिए, अपने आप को थोड़ा बेटर साउंड करने के लिए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इडियम्स का यूज़ करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली इडियम्स विद कोड नेम्स. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कुकी का फोटो प्लेस्ड है. तो आज हम करने वाले हैं जो इडियम है वो फर्स्ट इडियम है हमारी स्मार्ट कुकी. तो स्मार्ट कुकी का मतलब होता है द पर्सन हु इज वेरी इंटेलिजेंट. फॉर एग्जाम्पल रवि नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, ही इज अ स्मार्ट कुकी. यू कैन नॉट फूल हिम, ही इज अ स्मार्ट कुकी. सेकेंड इडियम है हमारी एप्पल ऑफ वंस आईज. इट मीन्स when we love a person very dearly, then we say that he or she is the apple of my eyes. For example, Sarha's daughter is the apple of her eye. She adores her more than anything. The third idiom is the piece of cake. So piece of cake का मतलब है when we want to do something which is very easy task or something very easy to do, then we say that it's just like a piece of cake for me. For example, don't worry about the test. It's going to be a piece of cake. I found this puzzle to be a piece of cake as it was very easy. So before proceeding further, I would like to request you that if you have not subscribed to my channel yet, please do subscribe and hit the bell icon so that you get all the notification in advance. And if you really like this video, please press the like button and share it with your friends. So let's start with another idiom. So our next idiom is spill the beans, which means when you accidentally reveal a secret or share some confidential information. For example, Michael accidentally spilled the beans about our surprise party. It means कि आप कुछ बोलने नहीं वाले थे but accidentally it slipped out of your tongue. आपसे अचानक वो बात निकल गई तो आप बोलेंगे that he spilled the beans. Means he accidentally shared something which he was not supposed to share. Wow. The next idiom is a couch potato. Couch potato means a very lazy person, a person who lives a very sedentary lifestyle. For example, after a long day at work, I just want to be a couch potato and binge watch my favorite series. Let's move into the another idiom. Our next idiom is to be the cream of the crop, which means the best or superior in a particular group. For example, out of all the talented artists, Jane is truly the cream of the crop. For example, we can also use it
in a classroom setting where we want to say that a particular student is the cream of the crop, right? He is superior to the other students. As we can see, this is like to butter someone up, means behaving in a flattering or a charming way to gain a particular favor. Example, he was trying to butter up his boss by praising her work. जैसे हम बोलते हैं, अगर हम इसको हिंदी लैंग्वेज में देखें तो हम बोलते हैं कि मक्खन लगाना, है ना? मक्खन लगाना मीन्स आप किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको उसको प्रेज़ कर रहे हो और प्रेज़ इसलिए कर रहे हो कि आप उससे कुछ अपना मतलब निकालना चाहते हो, राइट? So next is the picture of a cucumber. So our next idiom is cool as a cucumber, which means very calm and relaxed personality. For example, my boss is as cool as cucumber. He always supports his subordinates. Our next idiom is a hard nut to crack. Means something which is very difficult to handle, solve, or understand. Let's see the examples. For some people, mountaineering is hard nut to crack. Means कुछ लोगों के लिए जो mountaineering है वो बहुत ही difficult task है. So हम ऐसे नहीं बोलेंगे that mountaineering is a difficult task. To make it more interesting, we can say it like mountaineering is as hard nut to crack. Another example is the last question in the exam was hard nut to crack. Means that the last question was very difficult to solve and understand. As we can see in the picture, it is a picture of bread and butter, which means the necessities of life. Let's see the example. He went to the city for earning the bread and butter for his family. Our last idiom for today is bigger fish to fry. Means to have something more important and interesting thing what we are doing at present. For example, he is not interested in going out for a movie. He has got bigger fish to fry. So thanks for watching the video. I would like to request you again, if you have not subscribed to my channel, please do subscribe and hit the bell icon so that you can get all the notification in advance. And if you really like the video, please press the like button and share it with your friends and family. Thank you.